Hi everyone, my name is Nisha. I want to share my Singapore Airlines interview with you all. Cabin crew interview which I had given. I'll share each and everything. What are the myths? What are the things that happens? What are the things that doesn't happen? Each and every detail with you. Stay tuned till the end. Otherwise, you won't have the knowledge of Singapore airline interview process. Yes, because I'm talking about that. The first thing you have to do is apply. Once you apply, you will have to wait for an invitation that the company will send you. An invitation has all these details: what is the time, what are the outfit that you have to wear, what is the venue, every detail, what kind of documents they want from you. Like Singapore Airlines is very specific about this graduation, so you must do the graduation and then only you can apply. 12th pass people they don't take. This is what the eligibility criteria of Singapore Airlines. They want this from you. See, I'll make another video of eligibility criteria of Singapore Airlines. That is a different story now. Now let me just focus upon the interview process. So the interview process of Singapore Airlines is very simple. It's not difficult. It's easy. Don't get scared. There are people who ask me ki my height is this, my weight is this, that I have scar, I do not have scar, I have this problem, that problem. I just want to say to all of you to just please appear for the interview, because I cannot assure you about your luck, है ना, कि आपका luck आपको कहाँ तक लेके जाएगा. Maybe you have scar here, but still you are becoming a cabin. Maybe you don't have any scar, you are very good looking, very pretty, very good with English communication, but still you are not getting selected. So this is something which depends upon luck, or luck also. So any doubt regarding all these things, you can ask me, but at the end I will always say please appear for the interview. That is what answer I have for all these questions. Now coming back to the thing which I was discussing to you, it was about the process. So yes, for the first thing you have to apply, wait for the invitation. I waited for the invitation, I received the invitation, and on 14th of January I paid for the interview in Delhi. In Delhi, Hyatt Regency में हमारा interview था. We appeared and I couldn't see any boys, only girls was there. जब मैं अपीयर हुई, मैंने देखा कि माई टाइम स्लॉट वॉज 9:15 एंड वी हैड मेड अ क्यू. एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इट, देयर वाज टू पीपल. Yeah, the first thing we did was they gave us a kind of a paper or something, a form or something, where we have to write our name and our passport number. We have to carry that, we have to make a queue, and one by one they're asking us, they're measuring our height. I am not sure how much it is. I think it's supposed to be 160. I'll make another video of that. Don't get confused. And they measure our height, and again there was a point which we have to touch. Same which happens with me in the Qatar interview. Yes, I think the moment I touched it, I could able to touch it. If you are able to touch this much also, then it's also is fine. And actually raise your feet little bit up in order to touch that line. Once you touch that line and you are done, they take that form from you. I think they give you that form, they mark a stamp upon that, and they ask you to go inside. So there is a sitting area, a big sitting area, and here also two HRs are sitting, and that side also two HRs are sitting. So I moved towards the HRs who were there, and there were two HR with the system. They were asking everyone to come by one and get the form and everything, the form which they had only given to us. I went over there, I gave them a form, and I think she was just checking that whether she has applied or not, and whether we have gave her the invitation or not. So they were just making sure. And she said, okay, fine, and they give me the form back. I was sitting and they give me a number. 1133 was my number. And similarly, other girls were also getting the same number, the different number, but they're going through the same process. Then we were waiting for GD round. I heard that GD round is so difficult. You won't be able to make it. It's like they give you very difficult topic and all stuff like that. I've heard, and I've seen the interview process of other people as well, and they scared me about the GD round. We six girl went in a room for the GD. We were sitting like this. Samne we have two interviewer, and they asked us, we want you to do a debate, and it's like a discussion only, but yes, three people have to speak in the favor of the topic, three people have to speak in the against of that topic. We were like, okay, and the topic which they gave us is white lies are good or bad, and we were not able to understand white lies, and I was like, white lies or white lies, what she's saying. Then they told me, no, it's white lies. सफ़ेद झूठ सही है या गलत है. तो obviously 3 people had said in the favor of that, 3 people had said in the against of that.
तो पहले मेरा ही टर्न था एंड शी टोल्ड मी कि निशा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अ लिटिल बिट एंड देन स्टार्ट विद द टॉपिक. I introduced myself a little bit and started with the topic. Whenever I am introducing myself, no matter how nervous I am, I just try to make a eye contact, and try to smile. And that has to be a genuine smile, not a fake smile. I do that. So the interview was sitting there, my colleague was sitting, and I was just making like this. Okay, okay, my name is Nisha, I'm 24 years old. I have done graduation in political science from Delhi University. Currently, I'm working as a cabin crew in India Airlines. And there were people from AirAsia also, from other companies also. Okay, we all spoken. We went outside. We were sitting again in a sitting area. There's a man. He came and he said, okay, which news you want to hear first, bad or good? We said, we have to listen both, so please tell us both. It's okay. And they said, you three, all six girls are selected. We were like, okay. Again, we went in front of a room where again inside two HR was sitting, all six girls, and I mean other girls also, which is getting shortlisted. We were sitting in front of a room, one by one the girl was going, and two HR taking the interview of one person. The moment she came outside, I went inside. They asked me to introduce myself and I did that. And उसके बाद में they said कि you working somewhere and something like that. I said कि yes, I'm working as a captain in Indigo Airlines since last 1 year. It's okay, tell me the moment which was so memorable for you with working in Indigo Airlines. So I tell कि the management of Indigo is very nice, and the moment you have any problem you just give a mail and they reply you, they revert you back. तो वी वर इट वॉज जस्ट इंटरेक्शन, डिस्कशन ही हो रहा था. कोई ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है. दे वर जस्ट asking me something, but I was also replying very comfortable. They made me very comfortable. They don't scare you by eyes. It's very nice, very soothing interview. But yes, people are getting rejected also in GD round also. And let me tell you one more thing. In GD round we had not spoken much. हमने एक दो लाइन ही बोला and we all sat. तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू स्पीक अ लॉट. आपको जो आता है अगर आप उसके फेवर में हो, थोड़ा सा दो तीन लाइन बोलते हो चलेगा. इफ समवन हैज ऑलरेडी सेट समथिंग, इफ यू आर कॉपिंग दैट पर्सन इन द जीडी, दैट इज ऑल्सो ओके, बिकॉज इट्स यू. अगर आपके दिमाग में भी वही आ रहा है और आप बोल रहे हो तो कोई इसमें हार्म नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. यू कैन डेफिनेटली स्पीक दैट. हमने वही किया था. तो ये हुआ. उसके बाद में दे सेड कि निशा, यू नो सिंगापुर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यू नीड टू हैव सम फन विद यू. हैव यू एवर बीन टू सिंगापुर? आई सेड यस, आई हैव बीन टू सिंगापुर. आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव and the apartments are very expensive, because they told me they don't provide any cabs or any home facilities to you, any accommodation, so you have to do everything by your own. Then I tell them कि yes, my friend is working over there in Singapore, and she said कि okay, Singapore. मैंने कहा yes. Then she said कि I hope she will help you. I said I hope so too. उसके बाद में she said okay Nisha, just wait outside. The moment I waited outside, they called my name, a man called my name. I went over there, and that was the last one. That was the kabaya round. You have to wear the uniform of Singapore Airlines. I wish I could have taken the picture of that. नहीं ले पाई मैं, because they ask you to keep all of your stuff over there. Then there's a shade they have made. You have to go behind that shade and you have to wear you have to wear their uniform, leave the clothes. The moment you wear your uniform, you have to come in the room. I mean, come in front of the HR, and they ask you to walk. थोड़ा सा ऐसे चल के दिखाओ, थोड़ा सा ऐसे चल के दिखाओ. They just want to see कि आप walk कैसा कर रहे हो. आप सिंपल ज़्यादा ओवर एक्साइटेड तो नहीं हो और ज़्यादा लो तो नहीं हो. तो सिंपल वॉक द वे यू वॉक कॉन्फिडेंटली. उसके बाद में दे आस्क यू टू चेक द हैंड्स एंड एवरीथिंग, ब्रेसेस, आई आप लेंसेज लगाते हो या नहीं. आई टोल्ड देम आई डोंट वेयर लेंसेज. उसके बाद में आई टेल यू वन थिंग, मुझे वो यूनिफॉर्म आ ही नहीं रहा था. आई जस्ट कुडंट गेट फिट इन दैट यूनिफॉर्म. द यूनिफॉर्म वॉज सो टाइट एंड ऑल साइज वॉज स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल. When I was changing, there was this Indian ma'am, and I mean the skirt was still fine. I mean, it was also not fine, but I could able to find a big size and I wear that. I was like, चलो ठीक है, it's tight, but at least ये थोड़ा सा तो आ रहा है, I can manage. बट जो ऊपर का जो उनका जो टॉप होता है, ओ माई गॉड, वो तो मुझे वो यहाँ तक आकर अटक जाता है. इज अ चेन, इज अ जिप. अब वो नहीं लग रहा था, ट्रस्ट में, क्योंकि मेरे को नॉर्मली मीडियम साइज़ आता है, इंडिया का मीडियम साइज़ आता है, और पता नहीं वो सिंगापुर का एक्स्ट्रा स्मॉल बहुत पतला नहीं आ रहा था मुझे. तो आई केम आउटसाइड एंड सेड कि मैम, आई एम नॉट एबल टू गेट फिट इन. तो शी सेड कि निशा, ट्राई, देयर आर मेनी क्लोथ्स. इट इज़ अ काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको,
जहाँ पे कपड़े लगे होते हैं, आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट। हैंगर्स में बहुत सारे टॉप्स है, बहुत सारे होते हैं, यू हैव टू चूज़ वन एंड यू हैव टू वेयर। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप पहन लो, इसको पहन के दिखाओ। एंड आई सेड कि मैंने कहा कि नहीं आ रहा मैम मुझे। तो शी सेड कि निशा इट्स ओके, मैनी माई फैट गर्ल्स ऑल्सो वेयर इट, सो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। मैनी हेल्दी गर्ल्स आई हैव सीन वेयरिंग इट वर्किंग इन आवर कंपनी, प्लीज़ चूज़ कोई देखो कोई बड़ा साइज। देन मुझे लगा चलो ठीक है, एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर चली भी जाऊंगी एंड तक यूनिफॉर्म राउंड में तो मुझे जाना ही है, भागना ही है, बिकॉज नहीं होगा मेरा यूनिफॉर्म राउंड में। आई एम हेल्दी और उनके हिसाब से मेरी बॉडी नहीं है। बट आई कुड एबल टू मैनेज, आई कुड एबल टू फाइंड अ क्लोथ टॉप ऊपर का विच वेयर इट वॉज रिटन एल, बड़ा सा एल। मैं थॉट लाइक एल लिखा है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ बट लेट मी जस्ट वेयर इट। तो मैंने जब पहना उसे, इट वॉज ऑल्सो टाइट बट एटलीस्ट मैं उसमें फिट तो आ गई थी। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि आई एम 62 kg एंड मेरे को, मैं अपना ऑब्वियसली साइज़ तो यहाँ पे नहीं बताऊँगी, 62 kg की हूँ मैं। लेकिन आप उस हिसाब से समझ लीजिए कि आपको वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा क्लोथ्स को कि यार ये नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी। अगर आप पतले हो तो वेल एंड गुड, पर ज़्यादा पतले हो तो भी प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज आप अंडर वेट में आते हो। अंडर वेट इज ऑल्सो नॉट गुड। सो देयर BMI इज 18 till 22 एंड यू हैव टू फिट इन टू डैट BMI। अगर आप 18 से भी नीचे जा रहे हो, सॉरी, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, देन दे विल होल्ड यू। तो मेरा ऑब्वियसली 23 था। दे आस्क्ड मी टू वेट आउटसाइड, आई सेड ओके। एंड उन्होंने मेरे पैर का स्कार चेक नहीं किया, जिसकी वजह से मैं कतर में भी रिजेक्ट हुई हूँ। पैर का स्कार मेरा इतना बड़ा है, उन्होंने मेरा चेक नहीं किया। And she asked me कि okay Nisha you can wait outside. I was waiting outside and again the ma'am, she was Indian, she told me okay Nisha you just wait for some more time, I'm just calling someone. तो she called a man, I think मुझे नहीं पता वो senior थे या क्या थे, and she asked me to come inside. When I moved inside, that gentleman had a look on me कि आप कितनी healthy हो and कितनी नहीं हो, and he told me कि Nisha you know now you have to maintain your body because obviously our clothes is like this and you have to be always fit into this. I said okay okay I know because उसके अलावा मैं बस कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। I know select होने के लिए हम सब यही बोलते हैं, मैंने भी सिर्फ इतना ही बोला उनको, जैसा कि okay that's all. He moved. Then ma'am came outside and gave me a scanner. She asked me to scan and said, Kinisha, whatever the negative point we told you, you just try to correct that. And whenever you are coming for the next interview, next time, you don't have to go through all these rounds. You have to come till for this last round, and that is a kabaya round, because it was just not getting fit. And there are some scars also. If you can see, there's a small mark. So she was asking me to correct this also. तो बेसिक थिंग्स था। मैंने कहा कि चलो ठीक है, इट्स ओके, नहीं हो रहा है तो इट्स ओके। मैंने कुछ माइंड नहीं किया, बिकॉज आई नो एंड आई वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड ऑल्सो, बिकॉज सिंगापुर इज़ सो एक्सपेंसिव कि आपको अपना खुद का पैसा लेके जाना पड़ेगा। 2.5-3 लाख रुपए यू हैव टू हैव विद योर सेल्फ, देन ओनली यू कैन सर्वाइव सिंगापुर, बिकॉज इन ट्रेनिंग ऑल्सो दे पे यू सो लेस, दे डोंट गिव यू एनीथिंग, दे विल नॉट गिव यू एनीथिंग। तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट में, सिंगापुर इज़ एक्सपेंसिव, वहाँ पे हर एक चीज़ एक्सपेंसिव है, खाने पीने की चीज़ एक्सपेंसिव है, आपको रेंट भी डबल देना पड़ता है, इट्स अ सिक्योरिटी अमाउंट, डिपॉजिट। सो मैं प्रिपेयर भी नहीं थी एंड दिशी टोल्ड में कि आप ऐसे ऐसे आना, ऐसे ऐसे हो जाएगा। लाइक ओके एंड आई मूव्ड आउट ऑफ दैट होटल। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल, आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, बट सिंगापुर के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इफ़ योर बॉडी टेंड्स टू बिकम फैट आफ्टर ईटिंग समथिंग और दी अदर थिंग। बहुत जल्दी अगर आपकी बॉडी फैट हो जाती है, आपकी बॉडी में फैट चढ़ जाता है या फिर आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी इन BMI एंड द सेकंड थिंग इज यू हैव टू बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग समवेयर और दी अदर, अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम। बिकॉज माई फ्रेंड इज ऑलरेडी वर्किंग इन सिंगापुर एयरलाइन, शी हैज़ स्टार्टेड फ्लाइंग नाउ। 3 months की ट्रेनिंग होती है, फॉर 3 months यू हैव टू सर्वाइव ऑन योर ओन। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं। उसने भी मुझे यही बोला था कि निशा फॉर 3 months यू हैव टू सर्वाइव ऑन योर ओन। बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत हार्ड वर्क होता है, डोंट गिव यू एनीथिंग, नीदर फूड नथिंग, नीदर इन ट्रेनिंग ऑल्सो, बट दे इन ट्रेनिंग दे पे यू 1450। 1450 इज़ नॉट अ वेरी गुड अमाउंट, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी, बट अगर आप वैसे देखेंगे सैलरी विल बी लाइक 3 लाख एज पर इंडिया, 3 लाख आपकी आ जाती है। उसने मुझे जो बताया मैं उसके बेस पे आपको बता रही हूँ। तो मैं आपके साथ और इन्फॉर्मेशन आई विल शेयर लेटर ऑन, लाइक क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या पर्क्स आपके लिए हैं, क्या डिसएडवांटेजेस सिंगापुर एयरलाइन में है,
एज अ कैबिन क्रू मैं सब कुछ शेयर करूँगी। सो दिस इज़ माई ऑनेस्ट इंटरव्यू ऑफ सिंगापुर एयरलाइन। इट वॉज ईजी, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं था, मज़ा आया, देने में भी अच्छा लगा, बट मुझे पता था मेरा नहीं होने वाला है। कबाया वॉज अ टास्क, नहीं होने वाला है। बट ये चीज़ अच्छी लगी, शी गेव मी अ स्कैनर एंड देन आस्क्ड मी टू कम आई मीन द नेक्स्ट टाइम एंड दे विल टेक मी डायरेक्टली टू द कबाया राउंड। तो अच्छा, एंड उनका यूनिफॉर्म भी कंफर्टेबल है, आई फाइंड वेरी कंफर्टेबल, जिपर्स एंड दैट स्कर्ट लंबा सा एंड दैट फॉर, वो बढ़िया है। तो किसी के अगर पैर पे स्कार भी है तो दे कैन कंसील इट एंड देन गो। हाथ के स्कार के लिए यू हैव टू डू समथिंग, बट पैर का स्कार तो मेरा तो देखा ही नहीं था। बट अगर आपको देखते हैं तो कंसील इट इन सच अ वे कि उनको फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली दिस स्कर्ट इज सो लॉन्ग, आपके एंकल तक टच हो रही है वो स्कर्ट, समझिए आप। तो फिर तो यही ऑनेस्ट एक इंटरव्यू है। आई होप यू लाइक इट यार। प्लीज़ मुझे बताओ अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और चीज़ पे भी इंटरव्यू बनाऊँ, बिकॉज मुझसे व्लॉग नहीं बनते हैं, मैं व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। तो आई ट्राई माई बेस्ट। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।